लाइव हिंदुस्तान पर हम लगातार पिछले 2 दिनों से जिसकी आशंका जता रहे थे, आखिरकार वही हुआ। इसराइल ने शुक्रवार अल सुबह वो कर दिया है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया एक भयंकर जंग के दहाने पर आ गया है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ये तय है कि ईरान उसका जबरदस्त जवाब देगा। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक इसराइल की एयर स्ट्राइक में IRGC के चीफ जनरल हुसैन सलामी, खातम अदबिया के हेड सरदार राशिद, ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रीदोन अब्बासी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर तेहरानची की मौत हो गई है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान में पासदाराने इस्लाम और बसीजी फोर्स को तुरंत मोबिलाइज करना शुरू कर दिया गया है। पूरी उम्मीद है कि अपने 2 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का ईरान बहुत जल्द भयंकर जवाब दे सकता है। खास बात यह है कि इस पूरे हमले से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। पहले रॉयटर्स को 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इसराइल ने ये हमले अपने स्तर पर किए हैं और अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद मार्को रूबियो ने भी यही बात दोहराई है। हमले के बाद IDF ने कहा है कि ईरान लगातार इसराइल के खिलाफ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। इसलिए हमने ये कदम उठाया है। कहा जा रहा है कि हमले के लिए इसराइल ने इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल किया, जैसे पिछले साल भी किया था। ईरान से जुड़ी वेबसाइट इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हमला अमेरिकी देखरेख और जानकारी में हुआ है, जबकि अमेरिका खुद को इससे अलग करने की कोशिश में दिख रहा है। उसकी वजह है कि ईरान पहले ही कह चुका है कि किसी भी हमले पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकाने उसके निशाने पर होंगे। ईरान अमेरिका बातचीत के छठे दौर से पहले इसराइल के जरिए उठाया गया ये कदम अमेरिका की जानकारी के बिना उठाया जाना मुमकिन नहीं है। गुरुवार 12 जून को ही ईरान ने ऐलान किया था कि उसने ज़मीन के भीतर अपना तीसरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप की तमाम धमकियों को दरकिनार कर ईरान ने फार्दो नाम के न्यूक्लियर प्लांट से फर्स्ट जनरेशन के सेंट्रीफ्यूज को बेहद एडवांस छठी जनरेशन के साथ बदलने का भी ऐलान कर दिया था। ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी AEOI के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने खुद इस बात को साझा किया। इतना ही नहीं, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान दुनिया को धोखा दे रहा है और तबाही का प्लान बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करना चाहिए या नहीं। ईरान ने अमेरिकी पेशकश को 100% अपने हितों के खिलाफ बताते हुए इसे खारिज कर दिया था और 12 जून को अपने तीसरे न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट के काम करने का ऐलान कर दिया। हालांकि वो कहता रहा है कि वो अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए ये कर रहा है, हथियार बनाने के लिए नहीं। लेकिन अब उसी फलौंद और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करके शुक्रवार तड़के इसराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। वहीं इससे अमेरिका का पीछे हटना बता रहा है कि क्या US ने इसराइल को अकेला छोड़ दिया है या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister,
I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you,
Believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.